On behalf of SmartGaon and Richa, today we are having this industry expert session by Mr. Gaurav Nanda, Dr. Gaurav Nanda. So I'll just start with a brief introduction about the speaker, and फिर उसके बाद we'll start the session. So आज का session है artificial intelligence and machine learning, एक research approach by Dr. Gaurav Nanda. Gaurav Nanda is assistant professor of practice in the School of Engineering Technology and Purdue University in Indiana, United States. His research include the text mining, collaborative information system, and intelligent decision support system combining AI and human expertise. On behalf of SmartGaon and Richa team and all the students and faculty, we give a warm welcome to Dr. Gaurav Nanda. So Gaurav जी आपका स्वागत है सेशन में. आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको. So could you just please take over the sessions now? Okay. Yeah. Thank you, Rahulji, and welcome everyone in this talk. So I will share my screen. Sure. Okay. Are you able to see the PowerPoint? Okay. So today we will talk about artificial intelligence and machine learning, a research approach. So mainly I will discuss what are the various applications of artificial intelligence and machine learning. So my research is in like a few different areas but the common theme is application of artificial intelligence and machine learning in these areas. So I will go ahead. So if there are any questions, please feel free to ask in between. And I understand there is a question and answer session at the end. So either way is fine. If you have a question in between, please feel free to stop me and ask a question and we can discuss, or you can ask in the end. Ji. We'll go in that. Okay, so little bit background about me. So I did my B.Tech and M.Tech dual degree from IIT Kharagpur in India. I graduated in 2005. Then I worked in Infosys Technologies from 2005 to 2010. And after that, I came for my Ph.D. in Purdue University. So I completed that and then did a postdoctoral research in Purdue itself. And now I'm a faculty member in Purdue University. Good. Okay. So when we talk about artificial intelligence systems, these are present in a lot of different areas. The kind of, for example, if you are watching movies or if you're watching videos on YouTube, there is an artificial intelligence algorithm behind it that keeps on recommending you the videos you might like. And that is based on a lot of data that they have collected. And so some of the common processes in any AI system is first we get the data to understand like it is real world data. We get that data like what is, let's talk about YouTube videos. So what is the video that many people watched after this particular video? So we will get that kind of data. And then what are the videos that people are watching after video 1, video 2, video 3, like that. So this data collection is an ongoing exercise, and data is being collected from various real life domains. So from internet, then in real world data also, like when people eat at certain restaurants and then they leave
reviews of that restaurant, that data is collected. There are many examples of that. So once data is collected, then it needs to be cleaned, and it is need to be put into format and identified. Then what is it that we are trying to predict? So for example, if we take bank, then in bank they will collect data about what are the background of people that have taken loan, and then which people were like have been able to pay off that loan. So based on that, they can see that if a person has so much income, if there is they have so many assets, like they have a shop or they have a business which is earning this much, then they can estimate this person will be able to pay off the loan in the whatever the period of the loan. It will be a successful loan. Similarly, if they see that lot of people in the past, they have not been able to pay the loan if their income level is less than a certain amount, or if there are some other factors, then that will tell that this if the background is similar to that, then they will not be able to pay the loan. So this kind of training is done by the AI models, where they see patterns in data that has been collected from real life, and they try to predict the outcome based on the background. So for example, they have seen that if the person earns more than 10,000 rupees per month, and they have taken a loan, they are requesting a loan for 1 lakh for let's say 10 years, it is most likely they will be able to pay that loan. And there are various models, AI models, such as there are some classical AI models or machine learning models, such as naive Bayes or logistic regression or support vector machine that have been used. And these days, after 2013, there has been a lot of advancements in using neural network models with like multiple layers, which we call as deep learning models. So these deep learning models, they are good for very high dimensional data. With high dimensional, I mean data that has lot of different features. So for example, image data or text data. So those deep learning models have been found to be good. So once the model is trained, then we test it on the data, see how well is it able to predict on the data that is there. And then as we get more and more data, the model gets improved and its predictions become more accurate. So this is the usual flow of AI systems. And so first we get the data, then we clean up the data, then we train the model, test the model, improve. And this is a cyclical process where we keep on improving the model and its predictions. Okay. So some of the issues, common issues that have been identified with these AI models is first is the trust and transparency. So as I mentioned, some of the classical models such as naive Bayes and logistic regression, the mathematical model of behind these machine learning model is simple, and it's easy to understand for humans, like how why it is doing something, like why is it predicting this way. So there is some transparency, and with transparency, trust comes. So if you understand why a model is behaving in a certain manner and you know why it is doing so, then you kind of trust the model. But if you don't understand why is it doing what it is doing, then it is hard to build trust in such systems. So a lot of these new models, they or complex mathematical models, they are referred to as black boxes. So it is hard to understand why they are making these predictions, because there are a lot of complex mathematical functions in between, and they try to do optimization continuously so that they are able to do better predictions.
But when it becomes a black box, then the trust in those systems and trust in those models, they drop. The second issue is liability, of course. So if AI system is making decision on behalf of people, something that is affecting lives of people, then there are legal consequences. And if any law is involved, then that is an issue. So some people might have heard the issue with Tesla self-driving cars. So they have been in accidents, and these cars are also using AI models, those self-driving cars. So when these cars, let's say they hit someone on road, then I mean it is a legal issue, and then there is a lot of backlash also because of that, and it's a complex issue. So where does the responsibility of AI system and what is the liability of the person involved? So that is, I mean, that is another ongoing issue with use of AI systems. The third one is control. So, can we trust these AI-based systems to be completely autonomous or take complete control? Is that something that we are okay with? In some cases where the outcome is not very, I mean, if it does not involve very high stakes, then probably it is okay. Let's say setting up a meeting reminder, or something like sending an email or something. But where it is a matter of life and death or accident, then the control issue becomes really critical. So similar to the example of self-driving cars, are we okay to do that? So that is an issue. And the last one is security. So can companies, I mean, what if somebody manipulates these AI systems? So as we saw that these AI systems, they are very data driven. So if somebody injects something, let's say manipulative in the data, that will impact the outcome of the machine learning model. For example, it can be a bias that is introduced in the data towards a particular group or towards a particular gender. Then the model will make recommendations that if somebody is of a particular group, or if they are of a particular gender, let's say the model will predict they will not be able to pay off the loan, so they will not get the loan. So they have real consequences. So how to deal with those kind of biases? So while these AI systems are, they are able to make pretty good recommendations, they have not reached a stage yet where they can be given complete control, or they can be asked to do things autonomously. So one of the things is they only know so much as the data that they have been trained on. They do not have knowledge beyond the data. But humans, they have what we call as general knowledge. So they are not just dependent on this data, but they learn things around the world, and they have been learning since childhood. So that common sense or general knowledge that is present in humans, but that is not there in AI systems. So they are likely to make some mistakes, which can be critical. So that is why giving complete control or complete automation to AI systems where complex decisions are involved, that remains a challenge. So my work or my research is towards using these AI systems as a support to humans, not to replace the humans. So these AI systems, they are good because they can analyze a large amount of data very quickly, which will take humans to a lot of time. Let's say if
you have to read 100 files, uh, and you put 10 people on that, and they read one file per day, it will still take 10 days. But if you give those files to computer to scan through and then get some inputs from the file, it can do it pretty quickly. So there are strengths of what AI can do, but there are, as I mentioned, it does not have common sense, and there are things we cannot expect the AI systems to do. So if you look at them, the machine learning and human expertise, they have complementary strengths. So the machine learning or AI system, they can analyze a lot of data in a very short amount of time. And humans, they have the expertise and general knowledge. They can use the inputs from those data very quickly. Okay. So excuse me. So the idea is to use the complementary strength of machine learning and human expertise and make these systems resilient to human error and variation. So the thing with humans is that they will try to, if a lot of people are working on the same thing, there will be some variation. So people will do the same thing differently. While machine, uh, each of each time the machine will do thing, it will do in a consistent manner. So there is chance of human error and human variation when people are involved in a system, and AI systems can be used to reduce those human error. It can flag that if somebody is, let's say, working on a loan application and they're trying to uh, check that, okay, this person is does not have the required income for this loan, but they somehow, let's say, by mistake ignored that, and they try to pass the loan application, the AI system will flag it and say that, look, this income may be low, so you need to reconsider that loan application, or it may flag it for an additional review. So if even if the loan officer passes that, the AI system can flag it and it will go to a review for audit and for a second round of check. So those kind of things can help make the system more resilient to human error and human variation. So that is the idea, that to use AI and human expertise together as a intelligent decision support system, so that we can solve problem in a scalable and economic manner. So I work on multiple different areas. So first is Industry 4.0 supply chain. With Industry 4.0, we mean industry and supply chains that use mostly AI systems, and then use the Internet of Things, or IoT as we call them, IoT sensors. So what these IoT sensors are, is they collect data from at various stages of manufacturing, and this real-time data is collected and being continuously sent to a server. For example, if it is about, let's say, production of a milk packet, so they will know, like there are sensors where it will mark the packet when it is being filled, when it is being transported, so you can track it real time, where all the carton of milk is going, and till the time it reaches the retailer. Then from retailer, has it gone to customer or not? If it is at retailer and the date of expiry has come, then it will flag those things in the system. So that is Industry 4.0 supply chain operations. The second is healthcare. So safety and healthcare, I will talk more about that. So applications of AI systems in safety and healthcare. And the third is education. So in how to improve online education with the use of AI. So these are the different projects that I have been doing, and I'll share a brief overview of them.
So before we get to that, are there any questions so far? Students, any questions we have? I think we don't have, but I have one thing on Mm-hmm. the accuracy on this one, Dr. Gaurav. Mm-hmm. Like how we calculate the accuracy on the things. Like take an example of this scanned image, right? Mm-hmm. Uh, the accuracy of the content, how we can make sure that okay, the exact words or the alphabets are extracted or by the machine learning thing. Yeah, so for accuracy, like we use training data. In training data, we have we let's say the scanned image is there, and we will have some human who will actually annotate or write what exactly those letters are. Then we train the model on one part of the data, which we call as the training data, and we evaluate that on the test data set. So which Okay. is not used for training. And then we see, let's say there are 100,000 cases in the training data set and 100 cases in the test data set. So out of those 100, how many cases did the model predict correctly? So that, let's say if it did for 90 cases, so it is doing 90% accurate that way. There are other measures also, performance measures such as sensitivity, positive predictive value, which talk about different um, different performance measures of the model. But yeah, that is the way we do it. In real life also, if a model is highly accurate, then you can trust that if a new data or let's say a new scanned image is given to it, then it is likely that it will make a correct prediction. But if it is 70-80% accurate, then you can guess that will be you cannot trust that model so much with the accuracy. Okay. Well, means around 90 plus success rate is 90% or more is considered as the best model. Yeah, generally speaking, but it will vary depending on the context. So, for example, if you are, let's say, using a model for self-driving car, you would want to be 99% accurate. I agreed. Yeah, because if there is like even small error, then that person who is in the car, their life is in danger. So similarly, if you're doing Correct. a laser surgery using an AI model, you would want to be 99.99% accurate. So yeah, it Correct. varies, but yeah, generally, for low stake operations, 90% is good enough. But yeah, it Got it. really So depends. there is one more question from Vikrant. Uh-huh. What are the chances that what data we have collected is error free? Actually, this is a good question because our model is totally dependent on data. तो हम ये Yeah. कैसे पता करेंगे कि जो डेटा है वो करेक्ट है एंड Uh, वी हैव द फुल कवरेज ऑफ मतलब एक सेट ऑफ डेटा सेट चाहिए रहता है राइट तो uh. उसमें हमारा सारा कॉम्बिनेशन करेक्ट करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है हाँ, तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है, डेटा करेक्टनेस। और रियल वर्ल्ड से मोस्टली जो डेटा कलेक्ट होता है वो पूरा करेक्ट नहीं होता है। मतलब मैं जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ, जो इंजरी डेटा, एंड आई विल टॉक अबाउट इट लेटर आल्सो। तो उसमें क्या होता है कि from hospitals data is collected whenever like some injury happens. Let's say somebody um, uh, got a cut in their hand, and it was when they were cutting vegetables in the house. Then they go and they say, I was cutting vegetable and I cut my hand. So this narrative हम्म of injury, it is recorded in the hospital. So they will make a note of it. Then they will assign what is the cause of injury. So they will say it was a cut accident, but somebody might assign wrong cause of injury. Instead of cut, by mistake, let's say they type instead of cut, they say it was a burn accident. So then that wrong data has gone into the training model.
Now, what happens is this error is less likely to happen. So lot of times if there are 1,000 cases of cut accidents that have similar narrative, that they were cutting vegetable and the hand got cut and the actual category is cut, so the model will self correct itself because there are other correct data which outnumbers the data जो कि मतलब गलती से enter हुआ है database में. But अगर बायस है तो बायस इज वेरी आई मीन इट्स अ इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज ऐसा होता है कि कभी कभी डेटा इज नॉट देयर एट ऑल. लेट्स से इफ देयर इज अ बैंक that is collecting data and it has only served male customers who have taken loan, and then a female goes for a loan, then the model does not know how to how to predict, or if it predicts that they will not be able to like fulfill the loan, that is bias in the data because they should look at all the other aspects, not just at the gender. So इसी तरह से मतलब और भी कई एग्जांपल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर उसको it might disadvantage them. So data जो कलेक्शन है वो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है मतलब एआई मॉडल बिल्ड करने का एंड करेक्ट फेयरनेस के लिए. So usually, I mean, if it is a random error, that gets self-corrected. But a lot of times, you will need subject matter experts. They will look at the data. Random sampling, मतलब अगर 100,000 cases हैं, तो they might pick up 1,000 or 10,000 cases, and they will assign 100 experts, and they will look at these data sets, and they will see if everything is correct, or they can predict some kind of error in that. That is one approach. There are other approaches where you use 2 or 3 different machine learning models and try to predict different categories. If there is conflict among those, then you can find those cases where it can indicate कि कुछ मतलब सही नहीं है data में, why they are making different predictions. Then there are also like clustering techniques that will group the data into different groups based on category, and उसमें अगर if you are getting mixed up categories, that is another indicator कि data में there is some error. But yeah, that is a very relevant, a good question and a very relevant issue in all the data. जो भी real world data है उसमें मतलब बहुत सारे issues होते हैं. करेक्ट. एक और क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम जिनेंद्र जी. आई थिंक विक्रांत जी आपका क्वेश्चन आंसर हुआ होगा. एक और क्वेश्चन आया है जिनेंद्र जी की तरफ से. जिनेंद्र, आई एम सॉरी आई मिस्ड द अर्लियर चैट. हाउ द डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैपेंस? ओके, सो डिप्लॉयमेंट मतलब तरह तरह से होता है. एक तरह का डिप्लॉयमेंट होता है क्लाउड बेस्ड, जिसमें एक सेंट्रल सर्वर है जहाँ पे ये एआई मॉडल डिप्लॉयड है, एंड सारे डिसीजंस जो हैं मतलब डेटा जो है वो जा रहा है सेंट्रल सर्वर पे. It is making a decision and sending it back to the terminal or wherever the person is. And मतलब वहाँ पे वो डिसीजन हो रहा है, तो सारा प्रोसेसिंग सेंट्रल सर्वर पे होता है. नाउ IoT डिवाइसेस जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस जो है, जैसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एक है माइक्रोसॉफ्ट एज डिवाइसेस. दे हैव a very small compute capability where you can deploy AI model on the device itself. So उसको on-prem बोलते हैं. तो वहाँ पे डिप्लॉय है, तो वो उसको सेंट्रल सर्वर से भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो वो अगर जैसे मतलब वो एक कैमरा है, तो एक प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा. तो वो कैमरा है, उसी में मतलब कैमरा रिकॉर्ड भी कर रहा है, एंड इट इज एबल टू डिटेक्ट whether the person is wearing safety glasses inside workplace or not, or whether they are wearing helmet or not. And वो उसी पे decide कर ले रहा है. It does not need to connect to the central server. So deployment can be on a central server where data is collected and sent,
and the central server executes, let's say, it gets all the data, it executes, and then the decision is sent back to individual computers. uh, the models can also be deployed in on the devices, and it can just get the input and वहीं पे वो decision में लेकर वहाँ inform कर सकता है. तो यूजुअली ये मॉडल्स मतलब मतलब वो मॉडल तैयार हो जाता है, एंड उनमें बस इनपुट आप डालिए एंड वो आउटपुट आपको बताएगा प्रेडिक्शन की. अगर आपने जैसे ये डाला कि इस पर्सन का एज ये है, इनकी इनकम ये है, इनके इतने एसेट्स हैं, तो वो मॉडल बता देगा आपको कि ये इस अमाउंट का लोन इनका रीपे करने का प्रोबेबिलिटी क्या है. Okay, got it. Okay. Okay. Thank you, Doctor. I think we don't have any other question till now. ओके We can ओके या proceed with the update. ओके श्योर. Ji Gaurav ji. Yep. Thank you. तो अभी आते हैं इंडस्ट्री 4.0 सप्लाई चेन्स पे. तो ये एक प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने किया था. तो यहाँ पर क्या होता है कि इट्स अ कंपनी, वी डिड इट फॉर अ कंपनी, Procter and Gamble. So they have basically factories all over the world, and each factory they face some similar issues, and whenever an issue comes, then they actually try to basically solve it. And there is reliability engineering is a branch where they solve, there is a structured way where they analyze why that problem happened, and what was the solution, what are the various factors involved, and it's a documentation of the issue and what the resolution was there. So similar documents are prepared across various manufacturing sites and production sites across the world. But there is a good chance that similar issues are happening at different places. So Mhm. what we did was we created a central database, and all these files, they were analyzed using machine learning and text mining models. And if somebody had an issue, they can go and check on this central server if somebody has faced a similar issue or not, and they will be recommended all the kind of similar issues that have been resolved in the past with good success. So all these files were reviewed by industry experts, and they would see that these were good solutions and they can be shared across the company. So this also was using AI, and through that we were able to identify what are the similar level of problems and what are the similar level of solutions that can help in a particular issue. This project is about detecting safety glasses by using the IoT AI cameras. So this is a lab, and in this lab, let's say it's a factory, and in the factory, if the person has to work on a welding machine, for example, they should be wearing welding gear, the safety glasses, the mask, and everything. So the idea was, how do we prevent accidents from happening in factories, and how to use AI for that. So there are these AI cameras where they can detect if a person is. So we developed a model so that it can detect whether the person is wearing safety glasses or not. And if they are not wearing safety glasses, then the machine will shut down, and they will inform, send a text message to the supervisor that this has happened. And basically the idea is, if the person is not wearing proper safety gear, the machine should not be operate. It should not be in operation. So that was the idea. So this we developed using the Microsoft Azure platform. So we collected
a lot of data with people wearing safety glasses and not wearing safety glasses. And the machine learning model was trained so that it was able to detect if a person is there near the area and if they are wearing safety glasses or not. So, So, yeah. Gaurav ji, एक question है, sorry. हाँ, On this one, मतलब does this require a lot of infrastructure setup? क्योंकि cameras लगे रहने, cameras होंगे, right, for every हाँ, places where the welding works is happening from different angles, and then they are continuously tracking it out, right? Or हाँ, how that? हाँ, वो तो वही ये जो कैमरा है ये मतलब इसमें ये एआई इनेबल्ड कैमरा है, तो ये आईओटी Okay, कैमरा है। जैसे मैंने बोला था कि मतलब कुछ डिवाइसेस में ही हम लोग एआई मॉडल डिप्लॉय कर सकते हैं, तो इस कैमरा में एआई मॉडल डिप्लॉयड था एंड वो रियल टाइम okay, डिटेक्ट कैलकुलेशंस कर रहा था कि okay, अगर okay. एक कोई है, मतलब उस एरिया में कोई है या नहीं, एंड अगर कोई है तो उसने ये सेफ्टी ग्लासेस पहने हैं या नहीं पहने। तो वो कंटिन्यूअस कैलकुलेशन चलता रहता है। तो जैसे हर कैमरे का एक स्पैन एरिया होता है, तो उस स्पैन एरिया में वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई है या नहीं है। एंड मतलब जो अगर कोई है तो फिर उन्होंने मतलब ये सेफ्टी ग्लासेस पहने हैं या नहीं पहने। जी, पर हाँ, मतलब वो कैमरा तो चाहिए होगा। अगर कैमरा वैसा नहीं है, मतलब एआई इनेबल्ड नहीं है, तो कैमरा कंप्यूटर से कनेक्टेड रह सकता है एंड वो जो इमेज या वीडियो जा रहा है कैमरे से, वो कंप्यूटर में डायरेक्टली जाता है एंड कंप्यूटर में देन एआई मॉडल डिप्लॉय करके रख सकते हैं। तो हम लोगों ने वो भी ट्राई किया था कि कैमरा में अगर एआई मॉडल नहीं डिप्लॉयड है तो कैमरा से सिर्फ मतलब वो वीडियो का फीड लेकर वो कंप्यूटर में जा रहा है एंड वो वीडियो को कंप्यूटर में प्रोसेस कर रहे हैं। जी, तो जी, फिर जी, correct. कंप्यूटर में एआई मॉडल डिप्लॉयड है और वो वहां पर डिटेक्ट करेगा कि मतलब किसी ने पहना है कि नहीं, मतलब वो Hmm. सेफ्टी ग्लासेस, एंड देन वो फिर कंप्यूटर से जैसे ईमेल चला जाएगा या कंप्यूटर से अगर मशीन कनेक्टेड है तो वो मशीन को शट डाउन कर देगा। Okay, got it. Thank you. हाँ, तो तो नेक्स्ट वही तो सप्लाई चेन में देर आर लॉट ऑफ आई मीन पॉसिबिलिटीज, सो हाउ टू like learn from historical data because a lot of data is available in unstructured form या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में या रिपोर्ट के फॉर्म में, so we can learn from historical data and be able to predict patterns in real time data that this issue is going to happen or some maintenance issue will be needed. So there are we can develop AI models for that. And again, it each of the scenario will need different kind of data collection and different kind of like new AI model to be developed. So there is not one like generic way of doing it, but we need to define the parameters that are actually affecting the outcome and then just use those when developing the model. So AI या machine learning में एक term होता है feature selection. So उसमें क्या होता है कि कौन से ऐसे features हैं data के जो कि really impact कर रहे हैं। मतलब जैसे लोन का एग्जांपल लेते हैं फिर से, तो लोन में वो पर्सन की इनकम क्या है, उनके एसेट्स क्या हैं, मतलब अब जैसे वो ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो मतलब उनके पास या उनकी एजुकेशन कितनी है, तो ये सब रेलेवेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। पर अब जैसे उनको खाने में क्या पसंद है, ये may not be representative और may not affect कि वो लोन जल्दी रिपे कर पाएंगे कि नहीं। तो ये एक Correct. फैक्टर है या ये एक डेटा पॉइंट है जो हम लोग बाय डोमेन नॉलेज जानते हैं कि वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं तो डेटा एनालिसिस या डेटा के इसमें भी टेक्निक्स होती हैं जिसमें से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस फैक्टर का कोई इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल जी, लोन जी, जी. वाले केस में अगर हम लोग लेके उनको खाने में क्या पसंद है और उससे एक मॉडल बनाए
और देखें कि उसका आउटकम से कोई रिलेशन, स्टैटिस्टिकल रिलेशन है कि नहीं, तो हमें मिलेगा कि कोई रिलेशन नहीं है। तो दैट मीन्स कि मतलब वो नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस फैक्टर को मॉडल में लाने की जरूरत नहीं है। तो मॉडल में हम इनकम, एजुकेशन, एसेट्स क्या हैं, सिर्फ ये होगा। तो अगर वो फैक्टर जो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है और वो मॉडल में है, देन इट विल इंक्रीज द कंप्यूटेशनल टाइम एंड इट विल डिक्रीज द prediction performance और accuracy of the model, because वो kind of एक noise आ रहा है डेटा में जो कि relevant नहीं है। Correct, got it. So next is healthcare and safety. So as I was talking कि injury surveillance में, मतलब इसमें मैंने काम किया है, मैंने हो गया काफी टाइम से। तो इसमें यहाँ पे ये होता है कि if any injury happens at workplace, that has to be reported to the government, or the injury that comes to the hospital that has been gets recorded at the hospital level. So if we look at type of injuries that happen across the world, and World Health Organization इस पे इन लोगों का काफी काम करते हैं। तो around 5 million people, माने उनकी they lose their lives, and there are many more that get seriously injured because of these everyday injuries. So injuries में fall सबसे common injury है, and then struck by or against, मतलब something hits a person or a person gets hit by something. So that is another. So these are two main common types of injury. Then there are motor vehicle injury, cutting and piercing, burning. So a lot of these different types of injuries are there. So the idea of injury surveillance is that we collect data about the injury and we identify what is the cause of injury, and based on that, we identify what are the leading factors behind the injury, and based on that we design safety regulations and like Okay. product features so that those injuries can be prevented. For example, अगर बच्चों के खेलने का कुछ है, टॉय है या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, and it's a new equipment and it gets launched, and after it gets launched we start hearing different kinds of injuries that are happening because of that product. Then they will study कि इस product से किस type की injuries हो रही है, and if there is a pattern, then the manufacturer has to put it, they either have to like modify the product, or they would have to put a safety warning that don't do this while using this product. तो वो जो गाइडलाइंस हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं, एंड व्हाट गोज बिहाइंड इट इज जो डेटा जो कलेक्ट होता है इंजरी का, एंड एनालिसिस होता है, एंड देन इट गोज टू द गवर्नमेंट टू अपडेट द सेफ्टी रेगुलेशन। जैसे है कि अगर आप मतलब वो साइट पर हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब हेलमेट होना चाहिए, देन you should have non-slippery shoes, and then you should be wearing अगर ड्रिलिंग के लिए जा रहे हैं तो कान में आपके वो होना चाहिए, हेडफोन होना चाहिए जो कि ड्रिलिंग की आवाज को कम कर सके। तो ऑल दीज सेफ्टी जी गाइडलाइंस दे आर अपडेटेड लाइक दैट, एंड नए नए सेफ्टी इंसिडेंट्स होते रहते हैं क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं मार्केट में, तो ये गाइडलाइंस को हमेशा अपडेट करना होता है। So this correct. assignment of codes of cause of injury, nature of injury, ये humans करते हैं, and again उसमें subjectivity होती है, inconsistency होती है, and time consuming होता है, तो उसमें machine learning models हम लोग use करते हैं। But चूंकि डेटा बहुत ज़्यादा biased है और skewed है, मतलब बहुत ज़्यादा fall और struck cases हैं, तो देर आर लॉट ऑफ रेयर कॉजेज ऑफ इंजरी जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे वो हैं, तो दे फॉर मशीन लर्निंग मॉडल इट बिकम्स हार्ड टू प्रिडिक्ट। सो फॉर दैट we like tried a lot of things, and we found that there are some rule based techniques along with the AI model that can be used to improve the
prediction performance of the model. तो ये कुछ उसमें से ये है जैसे टारगेटेड मतलब रूल बेस्ड जो नैरेटिव में है कि अगर इफ देयर इज अ नाइफ इन्वॉल्व्ड and there is a body part involved and the word cut is involved, then it is very clear that it is a cut type of incident, even though the model might predict something else. Or so there are actually injury models, theoretical models of injury that will that can be used to mine the text description, and they can be used to extract different parts of the model from the text, and then we can use that to override the predictions made by the machine learning model. Correct. तो ये जैसे फॉल का मॉडल है, and next is filtering approaches. So here we since all these models are not very accurate, so how do we filter the cases or identify the cases where the model is making wrong predictions? So if there are different techniques of doing that. So if the probability of prediction is less than 80%, for example, or we are using multiple models, they disagree, then we get to know कि okay, ये वाला case जो है, the machine learning model may not be confident that this is correct, so we need a human to review it. So we need to identify that in a manner that we are not filtering cases that are already correctly predicted. We are only filtering cases जहाँ पे machine learning model के wrong होने के chances हैं. तो उस पर कुछ काम था. And जी. okay, so then I also work on detection of breast cancer. So breast cancer को डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जैसे एज, उसके बाद फिर BMI, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, और ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि कलेक्ट करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू प्रिडिक्ट वेदर person is likely, like what is the likelihood that there is a chance of breast cancer, so that early diagnosis can happen and early intervention can happen, so that they can be basically we are able to provide early intervention and early treatment of breast cancer cases. तो हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेट करके उनको मतलब मशीन लर्निंग के थ्रू डिसीजन सपोर्ट देकर काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं. जैसे कौन से सीरियस केसेस, हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस आते हैं, बट इफ यू यूज एन AI मॉडल टू आइडेंटिफाई विच आर द केसेस दैट नीड immediate attention, and they will direct those cases to the doctors immediately. And there are some cases which are not very serious, or the AI model can direct them to nurses that they can handle at their level. So that is another thing that that will be really helpful. And online education में गौरव जी, sorry to interrupt, we have some questions. तो अभी लेना चाहेंगे या हम लास्ट में लें? Because हाँ, ले लेते हैं अभी, क्योंकि आई थिंक 9:23 हो गए हैं, तो ठीक है. या करेक्ट. सो पहला क्वेश्चन है, which programming languages are used for AI and ML? Okay, so Python is most commonly used, and it is free, completely free. So Python is, I think, right now, that is the most commonly used language for AI and ML. तो हाँ, तो Jupyter notebook है, वो वेब ब्राउजर में ही चलता है, and that is pretty convenient. आप it is very easy to install, और Python का आपका बहुत easy होता है. हाँ, तो Python. So next question is, हमें डोमेन नॉलेज की जरूरत पड़ती है क्या AI इंडस्ट्रीज के लिए? मतलब अगर आप जैसे कंप्यूटर साइंस से हैं, या फिर आप सिर्फ AI जानना चाहते हैं या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, तो नहीं जरूरत है आपको डोमेन नॉलेज की. आप जस्ट एल्गोरिदम स्टडी करिए. व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट समवेयर, मतलब आप जैसे उसको मेडिकल एरिया में डिप्लॉय करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं,
तब आपको जरूरत पड़ेगी जो भी डोमेन नॉलेज है, तो तब वहां पे आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। बट एज सच आपको नहीं जरूरत है डोमेन नॉलेज की। आप एआई और मशीन लर्निंग सीखिए और मतलब उसको यूज करना सीखिए। डोमेन नॉलेज तो आप पढ़कर मतलब अक्वायर कर सकते हैं, बट हाँ मैंने किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना जरूरी है जब भी आप डिजाइन कर रहे हैं मॉडल्स। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, is basic thinking behind the real life data and processing it like take an average of response and collective average like that? I think what Vikranji is asking it out ki how we are taking the data or something, डेटा, because अच्छा मतलब एवरेज डेटा कलेक्ट करते हैं या नहीं? correct, I हाँ, think yeah, नहीं तो एवरेज नहीं कलेक्ट करते हैं मोस्ट केसेस में, बिकॉज एवरेज जो है वो मतलब एवरेज आउट करके जो डेटा कलेक्ट होता है वो पैटर्न्स थोड़े छिपा देता है डेटा के। तो और एवरेज में क्या होता है कि अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, तो मतलब अगर आपका hmm, डेटा का रेंज 20 से 50 है, बट अगर एक आउटलायर या कुछ आउटलायर आते हैं डेटा में जो 70 के ऊपर है, तो वो आपका एवरेज बिगाड़ देंगे। तो हम लोग वो देखना चाहते हैं यूजुअली कि एक्चुअल डेटा क्या है। तो एवरेज आउट नॉर्मली नहीं करते हैं, मतलब जब रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्ट मतलब हम करते एक्सट्रीम केसेस को भी कंसीडर करते हैं कि हैं। एक्सट्रीम हाँ मतलब सबसे वर्स्ट सिनारियो क्या है और सबसे बेस्ट सिनारियो क्या है, आइडियल सिनारियो। हाँ, और कई केसेस में एक्सट्रीम केसेस को फिल्टर करते हैं कि मतलब वो कुछ, ओके, अगर मतलब कोई मशीन का प्रेशर का रीडिंग है वो 20 से 50 के बीच में है और कभी कभी वो 70 आ जी रहा है, तो ये हो सकता है कि वो उस टाइम आ रहा है जब मशीन स्टार्ट हो रहा है या बंद हो रहा है। तो वी डोंट वांट दैट, एंड अगेन फॉर दैट वी नीड डोमेन नॉलेज कि अगर 20 से 50 होना चाहिए तो वो 70 क्यों आ रहा है। तो डोमेन नॉलेज कैन टेल अस कि ये ऐसा है, एंड वहां पे हम लोग वो डेटा सेट को चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द टाइम जब वो मशीन स्टार्ट या बंद हो रहा है। मतलब जस्ट एन एग्जांपल। करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन इज दैट अभी अपन ने हेल्थ केयर का एंड एजुकेशन का एंड दिस, हाउ बिग इज द स्कोप ऑफ ऑल दीज इन इंडिया कंसीडरिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, मतलब अपने भारत में क्या स्कोप है, बिकॉज हमने कभी ऐसा सुना नहीं है जैसे कि आपके रिसर्च पेपर्स एंड लाइक विद द हाँ प्रेजेंटेशन व्हिच यू आर शोइंग इट आउट, राइट? तो हाँ। अपने इधर इंडिया में ऐसा कुछ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है एज पर एज हाँ मतलब हमारी हाँ। जानकारी में, या फिर शायद एट हाई लेवल हुआ हो। हाँ, तो अभी ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब कुछ कुछ जगह तो है। जैसे मतलब हम लोग मैंने मैं एक टीम के साथ काम करता हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया से है टीम। तो वो लोग इंडिया में भी हैदराबाद में कुछ हॉस्पिटल्स के साथ काम कर रहे हैं, जो लोग ये इंजरी डेटा वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। पर हाँ, डेटा कलेक्शन अभी उतना नहीं, मतलब जैसे वो सक्रिय नहीं है। पर मतलब स्कोप तो है और ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर जैसे हम लोगों को मतलब कई समय में मतलब वो पता चल जाए और ये एआई मॉडल्स रहेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि जो केसेस क्रिटिकल हैं वो डॉक्टर्स तक प्रायोरिटी में पहुंचाने में एआई मॉडल्स बहुत हेल्पफुल हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि अगर सिर्फ आप सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो जो पहले आया वो पहले जाता है। पर मतलब कुछ केसेस तो इमरजेंसी होते हैं, तो वो सीधा इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाते हैं, और उसमें भी मतलब अलग-अलग लेवल ऑफ सीरियसनेस होता है। तो वो जी हम लोग एआई मॉडल के थ्रू मतलब अगर वो कर सकते हैं। इवन इन मतलब टेली हेल्थ, जैसे लोग अपना क्या इश्यू है वो अगर फ़ोन पर बता रहे हैं, एंड वो लोग एक सिस्टम में डाल रहे हैं, जो नर्सेज़ हैं या इंडिया में जो आशा वर्कर्स होते हैं, वो अगर डाल रहे हैं, एंड एआई मॉडल इज एबल टू टेल देम कि इनको यहाँ रिडायरेक्ट करो या फिर ये मेडिसिन है, then it really will have an impact। एंड मैं मतलब काम कर रहा हूँ, तो और मैं भी जी मतलब सर। ट्राई कर रहा हूँ कोलैबोरेट करने का कुछ हॉस्पिटल से, जहाँ पे ये डेटा कलेक्शन हो सके, एंड जहाँ पे हम लोग ये मॉडल डिप्लॉय करके देख सकें कि उसका कितना इम्पैक्ट होता है। जी हाँ, डेफिनेटली
जरूरत तो है। जी। वन मोर थिंग गौरव जी, एक क्वेश्चन विक्रांत जी ने उन्होंने पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन लिटिल इन डेप्थ फॉर द डेटा कलेक्शन? आई नो दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन और अभी हमारे पास टाइम का है, बट आप एक हाँ थोड़ा सा टाइम में इफ यू कैन एबल टू हेल्प इट आउट विक्रांत। हाँ श्योर। तो डेटा कलेक्शन में मतलब आप जैसे कोई भी सिस्टम है जो कि डेटा रिकॉर्ड तो आजकल करते ही हैं। मतलब अगर आप लोन एप्लीकेशन जा रहे हैं तो आप वो सिस्टम में वो लोग एंट्री करते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन के लिए आया है, या जितने भी पास लोन है। अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो अभी वो नहीं होता है, पर वो धीरे धीरे होगा कि मतलब कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है कि आपकी एक फाइल होती है और जो कि आपका सारा डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर्ड है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बोलते हैं। तो जी डेटा जो स्टोर हो रहा है वो यूज होना मतलब अभी वो है। एंड उसमें अगेन जो डेटा कलेक्शन के इश्यूज हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि डेटा में कोई एरर नहीं है। तो और वो एरर फ्री डेटा अगर यूज हो रहा है मॉडल को ट्रेन होने में, तो वो मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि डेटा एंट्री लेवल पर ही एरर्स को मतलब फ्लैग कर सकें, या फिर अगर डेटा ऑलरेडी मतलब हम लोग जब स्क्रीन कर रहे हैं डेटा, तो उसमें आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ ये डेटा सही नहीं है या इस डेटा में प्रॉब्लम है। तो वो डोमेन नॉलेज से भी आता है एंड वो अगेन एल्गोरिदम से भी हो सकता है। तो जी मतलब वहाँ पे डेटा कलेक्शन में जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो रहा है उसके ऊपर वैलिडिटी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि होना चाहिए मतलब। ओके गॉट इट, थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ गौरव जी, सो गौरव जी आई थिंक वी आर जस्ट कंप्लीटेड द टाइम, सो हाँ अभी श्योर। आपके पास टाइम है या आप नहीं प्रॉब्ली वी कैन टेक? क्वेश्चंस हैं तो मतलब मैं ले सकता हूँ क्वेश्चंस अगर नहीं, कुछ। आई थिंक क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड इफ यू वांटेड ओके टू ओके कवर क्विकली। ओके। हाँ नहीं तो नेक्स्ट लास्ट वही एजुकेशन के ऊपर था जो काम मतलब मैंने किया है उसमें वही है कि जो लोग जैसे ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल करते हैं, तो वो उनसे जो सर्वे जब वो लोग भरते हैं लास्ट में कि व्हाट वाज इट दे लाइक्ड इन द कोर्स एंड व्हाट दे डिड नॉट लाइक, so those open-ended textual responses we analyzed using unsupervised machine learning, and we found that these are the things that mattered most to online learners. एंड अभी कोविड चल रहा है तो काफी सारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ये वाले फाइंडिंग्स मतलब उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जो कि टीचर्स हैं या इंस्ट्रक्टर्स हैं कि जी तो मीनिंगफुल इंटरेक्शन बिटवीन पीयर्स एंड एजुकेटर्स, तो वो चाहते हैं कि मतलब अच्छा इंटरेक्शन हो। then detailed information about syllabus, prerequisite and time commitment. So this is what is missing in most online courses कि exactly क्या उनको background चाहिए। मतलब अगर कोई कोर्स है तो उसमें उनको कैलकुलस आना चाहिए या नहीं, या उनको ये फिजिक्स में मतलब का कोर्स है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए या नहीं, वो क्लियरली मेंशन हो। और कितना टाइम कमिटमेंट होगा, मतलब 4 से 5 घंटे का होमवर्क है या 1-2 घंटे का होमवर्क है, वो क्लियरली मेंशन्ड हो, तो दैट इज हेल्पफुल। देन क्वालिटी ऑफ असेसमेंट एंड डिटेल्ड करेक्ट फीडबैक, access to further learning material, and then technical support and language support for people in different countries. So मतलब कई कोर्सेज अलग अलग कंट्रीज में ऑफर होते हैं, तो वो एंड फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स ड्यूरिंग टीचिंग। सो जब पढ़ा रहे हैं तो जितने रियल लाइफ एग्जांपल्स से आप रिलेट कर सकते हैं उतना अच्छा, मतलब लोगों को वो कनेक्ट करते हैं एंड वो मतलब अच्छे से समझ। जी सर। तो हाँ सर तो यही था लास्ट। तो आई थिंक वी कैन एंड इट हियर वी हैव अनलेस। वी हैव वन क्वेश्चन हियर। हाँ श्योर। वी हैव वन क्वेश्चन व्हाट फ्रॉम जिनेंद्र जी का। हाँ Can I get job into ML after doing the B.Tech or further studies is required?
नहीं, आप कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली बीटेक के बाद भी तो डेटा साइंस कोर्सेज हैं कई सारे, मतलब ऑनलाइन है और फ्री हैं, मतलब जैसे वो एक एंड्रयू एनजी का कोर्स है, वो डेटा करेक्ट, साइंस के हाँ। ऊपर, तो वो काफी अच्छा है। एंड वैसे मतलब वो कोर्स आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से करें, और देन देर आर कोर्सेज ऑन डीप लर्निंग and they are pretty good. I mean, once you do it, and everything is open source, आप पाइथन पे सारा कुछ कर सकते हैं, तो आपको मतलब कुछ अलग से वो नहीं चाहिए। तो वो सब कंप्लीट करने पर आप डेटा साइंस में जॉब ले सकते हैं, तो ऐसा मतलब वो नहीं है कि आपको कुछ और मास्टर्स या ये करने की जरूरत है। मतलब डेफिनेटली इट्स अ प्लस इफ यू डू अ मास्टर्स आफ्टर बीटेक, बट आई थिंक मतलब आप बीटेक के जो आपका टाइम है उसमें जो ये मतलब पॉपुलर डेटा साइंस वाले कोर्सेज हैं, मशीन लर्निंग वाले कोर्सेज हैं, आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली मतलब जॉब्स अभी तो काफी हैं डेटा साइंस में, एंड दे विल बी देयर, मतलब दे विल रिमेन देयर। सो या, so I mean, करेक्ट। yeah, so it is good to if you can do all those courses, and they are all free, so I mean it's good. एंड टू ऐड दिस वन, जिनेश जी, आपका दिस वन, अपने IBM स्किल बिल्ड प्रोग्राम में भी डेटा साइंटिस्ट के काफी कोर्सेज हैं। आपको Mhm. पाइथन आनी चाहिए, और पाइथन इज फ्री एंड यू कैन इजिली इंस्टॉल, एंड देन यू कैन कलेक्ट द डेटा, एंड छोटे छोटे स्टार्ट करके आप खुद पढ़ सकते हैं ड्यूरिंग द बीटेक ऑल्सो, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, एंड एज वी डिस्कस्ड कि अभी काफी जॉब। So हाँ, any other further questions, if anyone have, please ping into the chat. I'll just take 2 minutes. Okay, I think we are good. So thanks a lot, Gaurav ji. Thanks for the detailed session, where we have covered a lot of things कि AI ML क्या होता है, कैसे learning होती है, किस किस field में आपकी research है, and you have taken a lot of on the practical examples with the implementation कि how you have implemented, and you have uh, helped the industry and the people to use the machine learning to get the analysis. So on behalf of SmartGaon, Richa, myself, Navneet Nigam, I wanted to thank you for your time, and आपने students को इतने अच्छे से समझाया. I hopeful students and faculty will be really helpful. उनके sure. लिए काफी अच्छा रहा, and I'm just getting a lot of comments on the game. It was a great session, and thanks to you from the students also. So Okay, I great. got a say thank you, Gaurav ji. Uh, Thank you students for participation. आपने time दिया for this session, and thank you faculty members. Thank you all everyone who joined the session and spent time on this one. And we will come back to you with another session on the industry experts soon. So we'll be published the timeline. So with this closing remarks, thank you everyone. We are just closing the call. And again, thank you, Gaurav ji. Thank you, Navneet, and thank you everyone, and all the best to everyone for success. थैंक यू गौरव जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपकी स्लाइड्स हमें मिल सकती है तो प्रॉब्ली वी कैन हाँ, सर्कुलेट टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन आल्सो बी यूजफुल, ठीक है। मतलब उनको लो। हाँ, जी मैं जी। आपको ईमेल कर दूंगा नवनीत, ठीक है, तो जी आप हाँ, आप राहुल स्प्रेडशीट। राहुल को या मुझे कर दीजिएगा, हाँ, वी विल ठीक कनेक्ट। है। मैं, हाँ, आप ओके। वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं ईमेल कर दूंगा स्लाइड्स। ओके, जी जी जी, थैंक यू। थैंक ओके, यू। थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू।